Good morning friends, class 9 chapter number 7 triangles. In the previous video we have just complete out exercise 7.1. Now to start exercise 7.2 we just discuss a theorem. Angles opposite two equal sides of an isosceles triangles are equal. Isosceles triangle, a triangle in which any two sides are equal, it is called isosceles triangle. यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल हैं, एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. We draw a triangle ABC and suppose this side equal to this side, then its angle opposite to this and the angle opposite to this side is this. So these two angles are also equal. We have to prove the theorem theoretical, but firstly we prove the theorem by practical, यानी कि हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिससे कि हम इसका प्रूफ कैसे कर पाएंगे. सपोज इट इज अ ट्रायंगल ABC. Triangle ABC in which two sides are equal. We observe that the side AB and the side AC, both sides are equal. Now we have to prove that these two angles are equal. For this, now suppose it is a angle C. Now अगर हम इस एंगल के रिप्लाई को एंगल B पर पुट करते हैं and after putting this it's completely cover the angle B, then it is proved if in a triangle two sides are equal then their opposite angles are also equal. तो हमने इस एंगल के रिप्लाई को इसके ऊपर पुट किया and you can observe that this reply is completely cover this angle. So we can say that angle B equal to angle C. So it is a practical जिसकी हेल्प से हमने प्रूफ किया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. नाउ वी हैव टू प्रूव इट्स थ्योरेटिकल. सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो फर्स्टली वी नोट डाउन गिवन in triangle ABC, AB and AC both sides are equal and we have to prove the angle opposite to side AB which is angle C and the angle opposite to side AC which is angle B. So we have to prove angle C equal to angle B. Construction. In this question we have to construct a line segment which is bisector of angle A. Angle A, and we draw a bisector of angle A which intersect the side BC at point D. Construction. We draw AD which is bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. Cut BC at D. Now अगर हमें एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूव करना है तो फर्स्टली वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट दिस ट्रायंगल. अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कॉल हो जाएंगे देन बाय सिंपलिसिटी वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. सो इन दीज टू ट्रायंगल्स वी हैव टू फाइंड आउट थ्री पैरामीटर्स. फर्स्ट पैरामीटर्स ए बी इक्वल टू ए सी, इट इज क्लियर गिवन. सेकेंड पैरामीटर साइड ए डी इज कॉमन इन द बोथ द ट्रायंगल्स, सो 2SB है.
Now to complete the criteria, we have to find out third parameters, and according to the construction, we draw AD bisector of angle A. Bisector mean which divide a portion, which divide a total into two equal parts. So in this question, AD is the bisector of angle A, so we can say that this angle and this angle both are equal. So criteria is complete, SAS. So now start its proof. To start proof, firstly we note down from construction AD is bisector of angle BAC. So angle BAD is equal to angle CAD, यानी कि angle BAD and angle CAD both are equal. Now we note down naming of the two triangles and write down their three parameters. Triangle ABD and triangle ACD. In these two triangles, first parameter we note down side and of this triangle. Side AB is equal to side AC, reason it is given. Second parameters we just note down A mean angle, which is angle BAD is equal to angle CAD. We can say just proved, because according to the bisector we can say that. And the third, AD is equal to AD. What is the reason? Yes, common. So by SAS we can say that triangle ABD is congruent triangle ACD. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. And then by CPCT corresponding parts of congruent triangles. तो angle B is equal to angle C. एंड हमें यही प्रूफ करना था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आई होप द थ्योरम इज क्लियर. And in the question, when we use the theorem, we just note down the statement and use this theorem. Okay, note down and thank you.